come alive और आप देख रहे हैं कलर्स है खूब मोनिका संग मोनिका सूद। और आज हम स्टूडियो में नहीं हैं, हम स्टूडियो से बाहर हैं, एक बहुत ही अच्छी जगह। और हमारे पास बहुत बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो इंडिया से आए हैं और ऑकलैंड से आए हैं हमारे साथ बहुत अच्छा जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी बिंदी जी को, जो हमारे पास हम यहाँ पर आई हैं ऑकलैंड से। और यहाँ क्या चल रहा है, आज हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताएंगे बिंदी जी। Namaskar. Thank you for having me here, Monica. Most welcome. So, we've been spending the last 2 days with some children from Christchurch, sharing the intuition process with them. The intuition program has been an opportunity for them to trust and listen to that inner guiding voice that we all have, but as we grow, we start to doubt that voice. And so it's been an opportunity for them to learn some exercises, pranayama techniques, meditation, and start to understand what it is to actually catch those intuitive thoughts and listen to them so that they can be guided moving forward in their lives. That's amazing. Intuition तो हम सब ने सुना था, लेकिन actually क्या कैसे कर सकते हैं वो आप यहाँ पर बच्चों को सिखा रहे हैं। और प्लीज हमारे स्पेशल गेस्ट के बारे में आप हमारे सारे दर्शकों को बताइए। Also, I hope it's okay I'm speaking in English. I understand Hindi, but my Hindi is probably really bad. No one will understand me if I speak in Hindi. That's all right. It has been such a pleasure to have Malaji here with us in New Zealand. She's travelled all the way from Bangalore. Malaji has been teaching these programs, actually the Art of Living programs, for almost 25, 30 years. But the intuition program per se is since 2006. 2015. Her background is in sports, so she's played for the national women's cricket team in India. Oh wow, great, incredible! So it's a great privilege to have you here. She's also the director for the Children and Teens Desk internationally for the Art of Living Foundation. So she comes with a lot of wealth of experience when it comes to working with children and teens. माला जी प्लीज आप थोड़ा सा शेयर करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ। नमस्कार। It's very nice to be here in New Zealand. बहुत वार्म जगह है, वार्म मतलब दिल बहुत वार्म है यहाँ। Thank you, माला जी। As Bindi was sharing, what we do here is we make children realize that we all have intuition, we have a sixth sense or a gut feeling, and to rely on that, because many a time, even though a thought comes, a very strong thought, we don't trust it because वो logic में चला जाता है मन हर समय, and हर वक्त intuitive thought logic से परे है। तो हम यहाँ बच्चों के लिए ये ट्रेनिंग देते हैं कि हम ये intuitive thought को हम कैसे उसको समझे, कैसे उसको ऊपर विश्वास और उसके साथ हम काम करें, क्योंकि when you are guided from within, it can never go wrong. There's so much of confusion, there's so much of information available everywhere, but what is good for me, ये हमारा मन हमको बताता है, पर वो सुनने के लिए हमको शांत रहना है, हैप्पी रहना है, लाइट रहना है. And what we do in the program is we make children come to that state of mind where they are happy, joyful, by doing some exercises to balance both halves of the brain, some exercises to improve their focus, their memory, also some exercises which breathing techniques which activate certain parts of the brain, and then we go into a beautiful meditation given by Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. And after that, they also have a very restful technique. Uske baad, what comes out of it is a very happy, very relaxed child who is able to connect with themselves, not just with themselves, but everything around them. I don't know if you have all heard, विष्णु का मतलब है अणु अणु में जो विशेष है, एंड हर अणु में ये ब्रह्मांड का ज्ञान होता है. Only thing is, how do we connect to this knowledge that is there in the smallest of smallest and the biggest of biggest? And that techniques have been given by Guruji, and that's what we're sharing with all the kids here. So primarily they get and they understand the way to connect
to every particle, everything around them and download this knowledge at will. मतलब ये सोचिए कि हर जगह से आपको जो कुछ भी उसका ज्ञान है हम वो पा सकते हैं विदाउट रियली नोइंग अबाउट इट. वो हमारा कॉन्शियसनेस का एक गुण है. ऐसे उपनिषद में कहता है कि पश्चात्य चक्षु श्रुणोत्य करना, मतलब आंख के बिना देख सकता है. कॉन्शियसनेस का एक गुण है. Without ears, the consciousness can hear. We can move without the legs and act without the hands. The consciousness has these abilities. And that is what we see here. The children start reading with a blindfold on, they don't need the eyes, the apparatus for the eyes or hear for the ears. And that is just the tip of the iceberg, as she was mentioning, the confidence that the children get, the conviction that they get in their own thoughts, and also the ability to look inside when there is a problem. This is what happens in a intuition process program. More than 120,000 kids have benefited across the world. And I would also like to share कि बहुत सारे हम research कर रहे हैं ये ज्ञान के ऊपर. इंडिया में हमने ब्लाइंड बच्चों के लिए ये कोर्स करवाया है. जिनको कॉर्निया नहीं है वो बच्चे कलर्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं फ्रॉम बर्थ. दे आर ब्लाइंड. एंड व्हेन वी आस्क देम हाउ आर यू एबल टू डू, यू हैव नेवर सीन द कलर्स, तो वो बोलते हैं हमको कुछ आता है मन में, वो हम बोल रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, मैं वो बोल रही हूँ. So, ये ज्ञान है हमें, पर उसको हम कैसे पाए, उसको हम कैसे how do we understand it? That is what we do. In fact, we have worked with a lot of ADHD kids where children have become very, very, very understanding after that, and we have seen that schools have become so happy after these kids have done this. Their ADHD has come down so much because the violence levels have come down. We have also seen that, we have done this with some deaf and mute kids. Pura. Unka na, what the scientists and the people who are doing the research, when we were doing this, they were like, ma'am, ये क्यों कर रहे हैं आप? उनको सुनता नहीं है, वो from birth उनको सुनता नहीं है, इसमें क्या होगा? इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, इनके ऊपर रिसर्च करना बेवकूफी है. वहां तक चले गए थे लोग. But then we still said we will see what happens. It's okay, they may not hear maximum after the program. But to their great surprise, what has happened is there is an inner ear vibration which was not there before the program. And their hearing decibel levels जो है has come down by 40-50%. मतलब the loudness of what they can hear to what they are hearing now, the loudness is much less. So it is helping all kinds of children, not just ones with all these issues, but even regular kids who have maybe some little bit of sleep issues, resting issues, or slight health issues. We are seeing a huge change in them. I know I've taken quite a bit of time, but all in all, I feel this is one gift that we should give to the child so that they have a smile on their face forever. बिल्कुल, थैंक यू सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए. और जाने से पहले मैं ये जरूर पूछना चाहूँगी कि कितनी एज ग्रुप के बच्चों के लिए ये कोर्स है यहाँ पर? ये 2 दिन का कोर्स है. 2 एज ग्रुप का होता है. पहला है 5 साल से 8 साल तक, और उनको हम जूनियर्स कहते हैं. और जो सीनियर्स का है 8 साल से 18-18 तक है. एंड दे आर 2 different, slightly 2 different programs and techniques for them. उनके एज के हिसाब से ये सब टेक्निक्स डिजाइन किया गया है. थैंक यू सो मच माला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, और जैसा कि आप सब ने सुना कि माला जी ने बताया इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और उन्होंने सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दिया कि सारा ज्ञान ये सब है, हम उसके साथ कनेक्ट कैसे करें, उसको पता कैसे करें, सब कुछ है उसको जानने के लिए, कैसे अपने अंदर वो
ताकत लाएं, कैसे उसको जागृत करें, इसी के लिए कोर्स है। और ये बहुत अच्छा है कि ये छोटे 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए है, और उन्हीं के एज ग्रुप के हिसाब से, जितनी उनकी उम्र है उसी के हिसाब से जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, वो सब स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं, और ये पूरा रिसर्च बेस्ड है। तो मैं फिर से एक बार आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप इंडिया से आए और यहाँ पर न्यूजीलैंड में आप ऑकलैंड में देख रहे हैं दिव्या जी, और यहाँ पर भी हमारे साथ 2 टीचर्स हैं, दिव्या जी और सीमा जी। तो आप प्लीज़ हमारे साथ इसको फॉलो करते रहिए। हम इस पे उनके नंबर शेयर करेंगे और आने वाले जितने भी कोर्सेज हैं टाइम में उनके बारे में जानकारी आपको देते रहेंगे। बट धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। So thank you so much to all the viewers who have been watching this, और मैं बस यहीं से धन्यवाद करूंगी सबका, और हैप्पी इवनिंग।